अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले क्वेश्चंस जो हैं वो हम देख चुके हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके हैं। और आज हमने करना है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है आई बटन पे डाल दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जी व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² + 2x - 1 = 0। हमें इसे सॉल्व करना है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट वी हैव टू डिवाइड द इक्वेशन बाय 7 बाय दिस फैक्टर। हियर वी शुड हैव 1. Coefficient of x² in completing square should be 1 because there is no complete square for 7 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना होगा 7 से। सो फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन बाय 7। सो 7x² divided by 7 plus 2x divided by 7 minus 1 divided by 7 is equal to 0 by 7. We get what? x² plus 2x over 7 minus 1 by 7 is equal to 0. Next we have to apply formula. As we know, a plus b, इसे यहाँ राइट कर लेते हैं, a plus b whole square is equal to a² plus b² plus 2ab. So we have to make, this is what, a² plus 2, a is what, x. We have to choose b such that we got this term. So if we choose like b is 1 by 7 plus 1 by 7 square, we have to add as you can see that if we write here 1 by 7, then we got this one. Okay, so we have to subtract 1 by 7 square also. Okay, so we have to close. Here we get all the formula. X plus 1 by 7 whole square, हमने ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया। लेफ्ट इज व्हाट, 1 by 7 minus 1 by 7 square is equal to 0. X plus 1 by 7 square, we have to shift these terms onto other side. We get what, 1 by 7 plus 1 by 7 square, x plus 1 by 7 whole square is equal to 1 by 7
plus 1 by 49. Now we have to take LCM. 7 plus 1, because 49 is multiple of 7. So 49 should be the LCM. 7 sevens are 49 and 7 ones are 7. So x plus 1 by 7 whole square is equal to what? So we get what? X plus 1 by 7 whole square is equal to 8 over 49. Now we have to take square root on both sides. So apply square root on both sides. We can write here taking square root on both sides. So x plus 1 by 7 square root is equal to 8 over 49 square root. Square root square को कैंसिल कर देगा. So x plus 1 by 7 is equal to plus minus 2 square root 2 over 7. We get the answer 2 square root 2 over 7. Now x plus 1 by 7 is equal to 2 square root 2 over 7. We have to do this with one time plus and one time minus. एक दफ़ा हमें इसे प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक दफ़ा हमें माइनस के साथ सॉल्व करना है. सो पहले हम प्लस के साथ सॉल्व कर रहे हैं. ये इधर आके माइनस 1 by 7 हो जाएगा और प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 over 7. सो क्या आंसर आएगा? -1 plus 2 square root 2 over 7. Next we have to solve it with minus x plus 1 by 7 is equal to minus 2 square root 2 over 7. So x is equal to minus 1 by 7 minus 2 square root 2 over 7. In the next, minus 1 minus 2 square root 2 over 7. So we got the value what? Minus 1 minus 2 square root 2, and the other one is what? स्टूडेंट्स, तो हमें हमारे आंसर्स मिल गए हैं. वी गॉट 2 आंसर्स. हम इनको मेंशन कर देते हैं. हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया. तो ये होता है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? ax square plus 4x minus a is equal to 0 and condition is given a not equals to 0. a जो है वो 0 नहीं हो सकता. So first step is what? We have to divide with this factor. Divide equation by a. So we get what? x square राइट कर लेते हैं. 4x by a minus a by a is equal to 0 by a. So we get what? X square plus
4 by ax minus 1 is equal to 0. Next, we have to find formula. This is what x square, 2 formula ka. This is a and we have to find b such that we get this term. So if we write here 2 by a, then we find 4 by ax. Okay, so we have to add the square of this one, 2 over a square. जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसे हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट भी साथ ही कर लेते हैं. सॉरी, यहाँ पे a आता है, स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फॉर्मूला हमारा बन चुका है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं. x प्लस 2 बाई a होल स्क्वायर माइनस 2 बाई a square minus 1 is equal to 0. So x plus 2 by a square, इन दोनों टर्म्स को उधर लेकर जाना है तो ये क्या बन जाएंगी, प्लस 2 बाई a स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर a स्क्वायर प्लस 1. x प्लस 2 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर. Now we have to take square root. So by taking square root, x plus 2 by a square, we have to apply square root here, also here, 4 plus a square over a square square root. Square root square cancel हो जाएंगे. By taking square root we get this. Now we have to solve ones with plus sign and also with negative sign. Plus 2 by a is equal to, first we solve with plus 4 plus a square by a. x इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इधर जाके हमारे पास माइनस बन जाएगी, 2 बाई a प्लस 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर a. एलसीएम आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट. So we get answer. Now we have to solve with plus sign. X plus 2a over minus sign, sorry, minus 4 plus a square square root over a. So we get what, minus 2 over a minus 2 over a minus 4 plus a square a. We get what, a minus 2 minus square root 4 plus a square. So we got two answers. We can write it combine also. What is minus 2 plus minus square root 4 plus a square over a.
So the third part is what? Third part equation is 11x squared minus 34x plus 3 is equal to 0. So we have to do first step. First step is what? We have to divide by this factor. x square के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड करना होता है. So divide equation by 11. So डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 34/11 एक्स प्लस 3/11 is equal to 0. Next we have to find square. Minus 2 is our formula. This is a. Next we have to find the term which makes this term. So let's find. यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम? We have to write 17/11 because if we multiply 17 by 2 then we get 34. So this one plus 17/11 square. We have to add the square plus 3/11 and we have to subtract also 17/11 square. जो स्क्वायर हम ऐड करते हैं उसे हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होता है. So now we have to close the square. X plus 17/11 square is plus 3/11 minus 17/11 square is equal to 0. X plus 17/11 square प्लस इसको शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आके ये माइनस 3/11 हो जाएगा और ये प्लस 17 स्क्वायर 17/11 स्क्वायर. X plus 17/11 square is equal to, we get what? 17/11 square हमारे पास क्या आएगा? माइनस 3/11 प्लस 289 121. Now we have to take LCM. Here we get what? 11 11s are 121. So 11 or 11 multiply 3 is what? Minus 33 plus 289 over 121. X plus 17/11 square. So by taking LCM we get 256/122. Now apply square root on both sides. Square root on both sides. So apply square root. X plus 17/11 whole square root and 256/121 square root. कैंसिल आउट हो जाएगा. X plus 17/11 is equal to plus minus 256 is the square root of 16. You can find by calculator and by hand also. X is equal to minus 17/11. इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा. प्लस 16/11. Now we have to take LCM. Minus 17 plus minus 16. So
एक आंसर हमें प्लस के साथ फाइंड आउट करना है और दूसरा माइनस के साथ। सो -17 + 16 divided by 11 and x is equal to -17 -16 over 11. So we get what? X is equal to -1 by 11 and x is equal to -33 by 11, right? So 11 3s are 33. So we got what? We got the answers -3 and -1 by 11. We got this answer. Okay. Now we have part 4 is what? Lx square plus mx plus n is equal to 0 and L not equals to 0. So देखें व्यूवर्स, बहुत गर्मी के अंदर जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए पंखा नहीं चलाया ताकि शोर ना हो। Please like, subscribe and share this video. So first we have to do what? Divide equation by this coefficient. If we divide, then we get what? X square plus m by L x plus n by L is equal to 0. Now apply formula x square plus 2 of formula x. Now we have to make this term. हमें ये वाली टर्म बनानी है। क्या करेंगे? m by L 2L अगर राइट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और m by L x बन जाएगा। Plus we have to add this square 2L plus n by L and we have to subtract also m by 2L square. जो स्क्वायर हमें ऐड करना है वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्लोज कर देते हैं स्क्वायर। x प्लस m by 2L स्क्वायर plus n by L minus m by 2L is equal to 0. Now we have to shift these two terms. M by 2L square is equal to minus n by L plus m by 2L square. X plus m by 2L square is equal to minus n by L plus m square over 4L square. Now we have to take LCM. We get what? 4L square as LCM. Here we get minus 4NL plus m square. Okay, x plus m by 2l whole square. Now we have to take square root. We have to apply square root on both sides of this one. X plus m by 2l whole square root is equal to minus 4NL plus m square over 4L square root. इसको इरेज कर लेते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा?
x plus m by 2l is equal to plus minus 4nl plus m square root over 2l। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट से वो कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर एंड एल स्क्वायर भी। सो नेक्स्ट ये वाला m बाई 2l जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर over 2l। Now we have to take LCM, minus m plus minus 4 and l plus m square root। So we got the answer is what? Minus m plus minus 4 and l plus m square root by 2l। So this is our answer। So fifth part is what? 3x square plus 7x is equal to 0। So next first step, what we have to divide by this coefficient। So divide equation by 3। If we divide, we get what? X square plus 7 by 3 x is equal to 0। Next we have to do x square plus 2 formula का x, we have to make this term। So if we write 7 by 6, 2 3 the 6, so we get 7 by 3x। We have to add the square of this one, minus also 7 by 6 square हमें subtract भी करना है, is equal to 0। So we get what? We have to close the square, x plus 7 by 6 square minus 7 by 6 square is equal to 0। x plus 7 by 6 square is equal to 7। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, x plus 7 by 6 square is equal to 49 by 36। We have to take square root, take square root x plus 7 by 6 square root is equal to 49 by 36 square root। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, x plus 7 by 6 is equal to 7 by 6 plus minus। So next we have to solve ones with plus 7 by 6 and minus 7 by। सो हमें पहले एक दफ़ा प्लस 7 by 6 के साथ इसे सॉल्व करना है और फिर माइनस 7 by 6 के साथ। ये वाला इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस 7 by 6 और ये भी इधर आके माइनस 7 by 6। सो वी गेट व्हाट? माइनस 7 by 6 get minus 14 by 6। So we get the values, this can be simplified
2 7 are 14 and 2 3 are 6. So x is equal to minus 7 by 3. We got the values 0 and minus 7 by 3. So this is our answer. So जी स्टूडेंट्स, हमने 5 क्वेश्चन जो हैं 5 पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन 3 के सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट 5 पार्ट्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को क्लिक कर दें और इसे ब्लू बना दें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।